Assalamu alaikum everyone and welcome to my YouTube channel Learning with Moms. Today I have brought the first term syllabus for nursery level, English, maths and general knowledge. You can see over here it's very simple. Some of the things are the reinforcements. For example, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर बताया कि कैसे आप लोगों को साउंड्स करवाने हैं बच्चों को विद द वोकैबुलरी, इसी तरह इस ईयर नर्सरी लेवल में हम बच्चों को A till Z स्मॉल लेटर्स विद सीक्वेंस करवाएंगे. हम कैपिटल A till Z भी करवाएंगे, बट बच्चे की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैपिटल A till Z कब करवाएं. तब जब वो अपनी स्मॉल लेटर्स कंप्लीट कर चुका हो और उसे स्मॉल लेटर्स की फॉर्मेशंस बहुत अच्छे तरीके से आ जाएं, देन कम टू द कैपिटल A till Z. ओके, सो इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस टू फॉलो स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स वाइल राइटिंग ऑन द लाइंस. इस पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा कि बच्चा जब अपनी स्मॉल A till Z या कैपिटल A till Z की प्रैक्टिस कर रहा हो तो वो प्रैक्टिस करते वक्त अपनी स्पेसिंग का ज़रूर ख्याल रखे. स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस एंड स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि बच्चा स्मॉल A लिख रहा है तो मोस्टली बच्चों का ये देखा गया है कि बच्चे A के साथ ही B लिख देते हैं, या अगर B उनको अलग से लिखवाया जा रहा है तो उसके साथ ही वो C लिख देते हैं. सो दिस शुड नॉट बी हैपन. बच्चे को स्पेसिंग हमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम उन्हें स्पेसिंग इन दिस वे सिखाएं. जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया, स्पेस विद अ फिंगर डिस्टेंस, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. उसके बाद हम आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड राइटिंग इनिशियल लेटर्स एंड एंडिंग लेटर्स बाय रिकग्नाइजिंग पिक्चर्स लाइक ओवर हेयर. यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स दी हैं. आप उनको अगर एक बॉल ड्रॉ करके देंगी एंड यू आस्क द चाइल्ड कि व्हाट इज़ द इनिशियल साउंड ऑफ अ बॉल, सो द इनिशियल साउंड इज़ B. And if you ask the child what is the ending sound of tree, so the ending sound of tree is this letter A. So it means that the child should be able to identify the beginning sounds and the ending sounds of any of the pictures. So इसकी practice बहुत ज़रूरी है. Then come to the concepts. Concepts for the first term which I have chosen are dark and light, dull and shiny, sleep and awake. And for the reinforcement, all previous concepts. कि जो previous concepts बच्चे ने play group में किए थे उन्हीं concepts को हम दोबारा से करवा सकते हैं. Okay? Then identify missing sounds to complete a word. Okay, ये चीज़ बच्चा तभी कर पाएगा जब वो CVC वर्ड्स स्टार्ट कर चुका होगा. एंड फर्स्ट टर्म में मेरे ख्याल में आप CVC वर्ड्स एकदम से लेके नहीं चल सकते बच्चे को, क्योंकि वो अभी सिर्फ फोनिक्स सीख रहा है और वो उसकी सीक्वेंस को अभी फॉलो कर रहा है. तो जब वो उसकी सीक्वेंस को कंप्लीट कर लेगा उसके बाद ही आप उसको CVC वर्ड्स पे लेकर आ सकती हैं. पर उसके लिए उसकी प्रैक्टिस इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. एंडिंग लेटर्स, बिगनिंग लेटर्स, मिडिल लेटर्स, 3 लेटर वर्ड्स में आप उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं एंड देन ब्रिंग देम टू द CVC वर्ड्स. Okay, after that let's come to the reader, and the reader which I will suggest you people for the nursery children is ORT level 2. Right now you can see a picture of the books, the set of 6 books, and these books are awesome for the emergent readers. These books are available at any bookstore easily, so you can go and find out. In the last you can see that the days of the week are there, months of the year, weather and seasons. So obviously there are 4 seasons, so the child should be able to identify the seasons, or at least the child should know the 4 seasons verbally. There are basic 5 weathers: sunny, rainy, windy, cloudy and snowy. And then months, the child should be able to tell the months of the year. And over here, days of the week are very easy. We have a lot of poems for the days of the week and months and weather and seasons. So you can check out for the poems and you can make your child learn all these names. Okay, now let's come to the maths. And in maths, for the first term, I have given here recognition, tracing and then independent writing of numbers 1 till 15.
उसके बाद आ जाता है ओरल काउंटिंग जो कि 1 till 30 है फॉर द फर्स्ट टर्म. So you can have the oral counting on daily basis, like with the clapping, with the snapping, with jumping, with hopping. Let's come to concepts. Long shot, tall shot, heavy light, full empty and few many. Shapes की सारी shapes की reinforcement होगी. Circle, square, triangle, rectangle, oval and all the solid shapes. फिर उसमें आप आगे addition करेंगी जिसमें मैंने आपको cube, कोन और स्फेयर बताया था. अब आप उसमें सिलेंडर ऐड करेंगी, आप उसमें एलिप्स ऐड करेंगी. मिसिंग नंबर्स 1 till 10. नंबर्स एंड वर्ड्स 1 till 5 होगा फर्स्ट टर्म में. नाउ दीज आर द एक्टिविटीज़ एंड द वर्कशीट्स विच यू हैव टू डू दैट कंप्लीट द शेप्स एंड मैचिंग एक्टिविटीज़. मैच नंबर्स विद द क्वान्टिटी. काउंट एंड राइट, यानी कि आप ऑब्जेक्ट्स देंगी, द चाइल्ड विल काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड द चाइल्ड हैज़ टू write in the box. Okay, now let's come to the general knowledge. General knowledge is very simple in the first term. Me and my family. इसमें obviously बच्चा अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने सिबलिंग्स के बारे में, अपने नेम का, अपनी एज का, हर चीज़ का वो बताएगा, अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में बताएगा. आफ्टर दैट me and my body. Me and my body, again the same thing. The child should be able to tell about his or her face parts and the body parts. My homeland में identification of country's name, city's name, country's flag, how many provinces do we have, and the identities of the country. Healthy habit, all the healthy habits the child should know. Courtesy words, for example, thank you, please, welcome, sorry, excuse me, may I, can I. These are all the courtesy words. The child should know all these courtesy words. Have discussions, you can have moral stories with the child to make your child learn all these courtesy words. So viewers, I hope that आपको आज का नर्सरी का सिलेबस फर्स्ट टर्म का बहुत अच्छा लगा होगा. Please give it a thumbs up, subscribe to my channel. Thank you for watching the video. Till then, Allah Hafiz.